जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्विज करने जा रहे हैं जी। Saturday is debited for closing the commission income account for the period. कमीशन इनकम अकाउंट को जब आप क्लोज करते हैं इज डेबिटेड द कमीशन अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, तो कमीशन इनकम डेबिट होगा। कहते हैं accrued expense at the end of the period is treated as liability। होता है जी accrued expenses। Which of the following might be a reasons when a bank statement shows greater balance than the cash book? Check issue but not yet presented। ठीक है, जब चेक आपने इशू किया है, कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है, बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ। चेक इशू, unrecorded check deposit when a bank statement show greater balance than the cash book, check issue। In case of creating provision for doubtful debts is credited। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एंट्री क्या थी, बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट होगा। कहता है एक्सपेंसेस इज पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज एसेट। नेक्स्ट कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक बिफोर प्रीपेइंग द बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक चार्जेस, अनप्रेजेंटेड चेक, एन एरर इन मिस्टेक, अनक्रेडिटेड चेक। An error in bank statement, deposit, bank charges। Rent receivable account should be debited to rent receivable का ओपनिंग बैलेंस की वजह से डेबिट होगा। एडवांस पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड, वही एडवांस पेमेंट आपका एसेट होता है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर इज एज एसेट फॉर द एंटिटी, फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक बैंक कॉलम, बिल्कुल जी। ओवर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये तो लाइबिलिटी होगा। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये भी वही बात है, ओवर ड्राउन बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस, ये जी विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट फॉर द एंटिटी, फेवरेबल बैलेंस है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की वजह से तो आपका डेबिट होता है। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, हाँ जी ये होता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश, ये हो जाएगा अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, जब विदड्रॉ करेंगे आप बैंक से कैश, डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये लेंच 10 आउट ऑफ 10 इंशाल्लाह। अच्छा जी नेक्स्ट क्विज कर रहे हैं जी। कहता है पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर अकाउंट डेबिट होता है जी। नेक्स्ट कहते हैं पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट होता है जी ओपनिंग बैलेंस की वजह से डेटर अकाउंट डेबिट होता है। इरिकवरेबल डेट्स आर आल्सो इरिकवरेबल, जो रिकवर नहीं होते वो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, जो डाउटफुल इरिकवरेबल। डाउटफुल डेट्स होते हैं। इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउ टू डेटर इज डेबिट, इनके डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा जी। कहते हैं इज क्रेडिटेड फॉर द क्लोजिंग द सैलरी एक्सपेंस फॉर द पीरियड, इज क्रेडिटेड सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। Which of the following is a reconciling item that disagreement between cash book and passbook, direct debt, credit transfer, uncredit, all of the given options है। नेक्स्ट करें इन केस ऑफ राइटिंग ऑफ डेटर एज बैड डेट्स इज डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट।
अच्छा जी, कहता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट अनटिल एट द एंड ऑफ द इज ट्रीटेड एंड द बैलेंस। इनकम रिसीव कर लिए, इनकम रिसीव बट नॉट येट अर्नड, बट नॉट येट अर्न, इनकम रिसीव्ड until the at the end of the accounting period। Liability is income received as the services may be. In case of goods sold on credit base, space is credited। In case of goods sold on credit base is credit। किसको क्रेडिट करेंगे जी? सेल को क्रेडिट करेंगे। In case decrease in provision for doubtful debts। अच्छा जी, which count is debited? provision for doubtful debts on debited। इंशाल्लाह जी ये भी 10 out of 10 है। Expense incurred but not yet paid till at the end of the accounting period। Expenses incurred हो गए लेकिन still payable है जी। Liability है जी। Rent receivable account should be credited due to rent receivable। ये credit होगा closing balance की वजह से। Expenses paid in advance at the end of the period is treated as asset। In case of creating provision for doubtful debts is debited। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे जी। Which of the following entries should be passed to record the dividend received from SI and company on the behalf of customer to update the cash book? Hmm, debit bank account and credit dividend account। Good, debit SI account and credit dividend account। Good जी, पहला ही है जी। In case of discount allowed to debtor space is debit। डिस्काउंट allowed debit होगा जी। Accrued expense at the end of the treated as liability। accrued expenses। अच्छा जी, नेक्स्ट रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। रेंट रिसीवेबल। अच्छा जी, which of the following should be debited in the bank statement? Amount deposit in bank, interest on deposit, interest on overdraft। In case of creating provision for doubtful debts is credited। doubtful provision for doubtful debts accounts credit होगा जी।